अस्सलाम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। पीएसएल का मेला सजने लगा है। 13 दिसंबर 2023 को एचपीएल पीएसएल 9 का ड्राफ्ट होने जा रहे हैं। वी डिड अ ड्राफ्ट ऑन आवर ऑलराउंडर्स चैनल अ डे अर्लियर। आप लोग टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। प्लीज हैव योर थॉट्स कि किस टीम ने वो ड्राफ्ट जीते, बट वो मार्कअप ड्राफ्ट थे। हम एक्चुअल ड्राफ्ट से बात करने जा रहे हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते होंगे, जहाँ अभी आप जब एंटर होने लगे स्ट्रीम पे, तो यू कैड ऑल सी द टाइटल के जो ड्राफ्ट एक्चुअल ड्राफ्ट होने जा रहे हैं हम उसकी प्रिडिक्शंस करेंगे। बट बिफोर दैट वी विल जस्ट रिव्यू द रिटेंशंस और द ट्रेड्स। सो इन अ वे जो अभी तक स्क्वाड्स कंपाइल अप हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। And the best part for today's show is we have three best representative from three different franchises. First, let me formally welcome Tala. Tala का debut हमारे channel पे. So Tala is representing Islamabad United. In case you don't know, so Tala, thank you so much for joining. I hope you are doing good. Thank you for inviting me, and it's a pleasure to finally join. I follow your show, so it's nice to be actually on air for once. Uh, Yeah, thank you for your kind words. And as an uh, wonderful fella of me, I would say, Twitter king of drafts, I would say, and he works brilliantly on cornertigers.net. Please do check out their website and, of course, give a follow to Asan right now in USA. So, Asan, of course, time difference hai, but we all are united for PSL drafts. क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. तो बहुत दिनों बाद कुछ क्रिकेट पे डिस्कशन करने को मिल रहा है, तो फील्स नाइस. Yep, same here. And of course, viewers, you might have seen Arham on our ARD draft show. In case you have not checked, as I mentioned, आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे जाके. He will be representing Multan Sultans. So Arham, farmer, welcome. Thank you for joining. Hope you are doing really good. Yeah, I'm doing well. Thank you for having me. It's great to be back. Yeah, hope you are, yeah, back to go. Hopefully you are not back with a bang. So viewers, of course, you can get involved in the chat. You can get involved in the live poll. जो live poll read out कर रहा है, will Islamabad United win win the PSL draft? Because एक popular opinion बनते जा रहे कि Islamabad United have nailed अब तक का जो स्क्वाड बना है, बट यू माइट हैव अदर ओपिनियन. सो बी go ahead and have your say with yes or no. And in case no, please have your comment के कौन सी फ्रेंचाइज का स्क्वाड आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के कंपैरिजन में तगड़ा नजर आ रहा है. So without a further ado, and of course viewers, please make sure to like, share and subscribe, give a follow to these wonderful people. So without further ado, let's start with Islamabad United. मैं privilege ले रहा हूँ being the host of today's show. I love Islamabad United as well. So Talha, ये हमारे व्यूवर्स पे देख सकते हैं अभी तक हमारा स्क्वाड जो है मेगा ट्रेड इन्वॉल्व, नसीम शाह एज वेल, इमाद वसीम एज वेल. जी काफी So first of I'd all, say let's have your say on yes. what has been the brightest. Yeah. Go ahead. Okay. So I'd say probably the two biggest trades of this window have involved Islamabad, with Naseem Shah and Imad Wasim joining. और जो लोकल कोर थी पिछले साल की इस्लामाबाद की, वो काफ़ी बदल चुकी है. हसन अली, वसीम जूनियर और अबरार अहमद अब टीम में नहीं है. बट आई वुड से एज अ होल द टू ट्रेड्स strengthen the team, and although you can say कि लोकल पेस बॉलिंग थोड़ी कम हो गई है, दो फास्ट बॉलर्स, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स चले गए हैं, लेकिन नसीम शाह आ गए हैं, उनकी फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है. तो और रुमान रईस भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके पिछले साल या इस साल डोमेस्टिक सीजन में. तो इस एरिया में थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए ड्राफ्ट में, लेकिन ओवरऑल आई वुड से दैट यस, probably Islamabad have
maybe on par with Lahore Qalandars, have the best retentions. Yep, of course, Alco didn't participate in a trade because I felt they didn't need it to be. But anyway, you can always make a case that they could have been involved. Uh, mm, Tala, there has been few qualms, there has been few allegations, I would say, on our squad, जो हमें detox करनी होंगी. That were the जी categories of Alex Hales and Colin Munro. So, how would you debunk those allegations? ये देखें एलिगेशंस तो हर कोई बंदा कर सकता है और हर टीम पे कोई ना कोई तो एलिगेशंस ही कर ही सकें जैसे राशिद खान सिल्वर में रिटेन हो गए हैं या और भी मतलब ओवरसीज प्लेयर्स हाँ. लोअर कैटेगरी में रिटेन हो जाते हैं तो इस पे देखें हंसी मजाक तो चलता ही रहता है लेकिन सीरियसली कोई एलिगेशन आए तो वो लीग ही कुछ कर सकती है हम तो बस अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं All right. Okay. We have opening statement from Tala. Let's switch it over to Multan Sultans. So, Aram, you will take the stage now. Um, Iftimania from Quetta Gladiators has been a blockbuster trade. Of course, not on par with Naseem Shah, but it can help you in so many other ways because ट्रेड्स इस वजह से नहीं होते कि आपने जस्ट स्क्वाड अनाउंस करना होता है in other ways you are building your brand and Iftimania is a wonderful brand to have. So yeah, touch down on that trade और overall आप कैसा देख रहे हो कंपोजिशन अभी तक आपको अच्छी लग रही है Yeah, FC Mania is totally one of the biggest trades that Multan has done so far, and I also feel that retentions में सिर्फ players अपने core को retain करना is not the thing. When you're making trades, you need to look at which particular picks you are getting in the draft as well during that trade. So I feel Multan has done pretty well with the exchange of the picks and the trades because सिर्फ बड़े players team में आना नहीं, you need to build a local core along with it as well, and this time we have had a complete overhaul with regards to the management as well. So Multan is on the right track in my opinion. We have proper batsmen, although we need to build on the overseas core as well, but our local core हाँ for the next few years, next few seasons, in my opinion, is completely set at this particular moment. We will just need to rotate our players, especially the overseas players in the future, and I think we are set for a complete 4 or 5 seasons ahead. हाँ बिल्कुल और आई थिंक सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मुल्तान सुल्तान ओनली फ्रेंचाइज जिन्होंने अभी तक सारे लाइक पाकिस्तानी प्लेयर्स ही पिक किए अभी तक रिटेंशन हो या ट्रेड्स हो सो या we might see a different मुल्तान सुल्तान all together of course हम ड्राफ्ट पे भी look at करेंगे and I think they have got a really solid picks so yeah of course वो थोड़ा बात का segment है now let's have Karachi Kings. I mean, I would lose my shackles here, but let me calm myself down. Karachi Kings की तरफ अगर हम आए तो yeah, Ehsan, switching it over to you. Okay, you guys have removed some controversial players, you know better. How do you see there is a clear change in mantra, and if so, क्या लग रहा है कि how which department is going to be your key department? Is it going to be batters? Is it is going to be all rounders, or like what? Have your say. I think definitely there is a change in mindset. हैदर अजहर साहब आए और उन्होंने थोड़ी changes किए हैं. हमारा जो core होता था like last season नहीं लेकिन last 2 seasons अगर हम चले जाएं तो I think हमारे main players होते थे बाबर, आमिर, इमाद and Hmm. like none of them are here this time. So definitely a new look Karachi Kings होगी. I think the draft is going to be very important for us क्योंकि we are rebuilding and retentions में अगर हम देखें तो probably not as strong as the other teams again because we are rebuilding. Hmm. So we really need to have a good draft. The good thing is कि हमारे पास 3 platinum picks पड़ी हुई हैं. बाकी retentions में I think जो मुझे नजर आ रहे हैं तबरेज शमसी he is going to be very important. Hassan Ali I hope he can bring back his old form.
Uh, Baki Shan Masood at the top. Hopefully, थोड़ी consistency आएगी. He's been in good form recently. That is good. And then Shoaib Malik at PSL level, he has been pretty consistent, but I would like um, there would be some more aggressive batsmen picked for the middle order to partner him. Um, and definitely bowling पे भी हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा Yeah. because in the draft that is going to be very important for us कि हम कोई अच्छे local या foreign pacers pick करें. Wonderful summary, wonderful summary. Okay, let me welcome Scoop Shot on this stage. His or her comment reads as here for Tala. So Tala received the welcome from him or her. Thank you for joining. Please stay tuned. We are going to have a blockbuster. That was just an opening statement. So before going into further look ahead, तला आई थिंक साइकिल रिपीट करते हैं. I think there is always a case to be made कि यार there was some glaring misses. Take Emirates में कि okay, I am not satisfied with Imad Wasim. I do think a manageable issue है. Like okay, I do think कि यार बहुत अच्छा player है. Like he is one of the best available resources. Seniors लॉट्स में देखे यंगर लॉट्स में से प्रिडिक्ट करना प्रोजेक्ट करना इट इज टू डिफिकल्ट बट इमाद वसीम एक तो ये था कि आई डू हैव reservations over attitude issues. Personally I won't be having such players, but I do think it is a recoverable issue. Like ये नहीं कि आप इस पे negotiate नहीं कर सकते. दूसरा I do think इमाद वसीम से हम एक साल मैक्सिमम पीक वाला निकाल सकते हैं. अगले साल फिर हमें फुलक्रम बनाना पड़ेगा. मुझे जो अभी लग रहा है कि इमाद वसीम के अराउंड हम फुलक्रम बनाना चाह रहे हैं. लाइक शदाब खान हो गया, इमाद वसीम हो गया. आर नॉट वी गोइंग विद टू मच ऑलराउंडर्स? नहीं, ये फिलॉसफी तो हमेशा से रही है कि टू बैट डीप फॉर इस्लामाबाद पहले सीज़न से ही. तो ऑलराउंडर्स ये काफ़ी अहमियत रही है इस्लामाबाद के लिए. आई थिंक इन दिस केस सिर्फ ऑलराउंड एबिलिटी पे नहीं देखा गया, सिर्फ ये भी देखा गया कि जो इस्लामाबाद के hitter रहे हैं आसिफ अली, he's lost form over the last 2 years since 2021 and he's been released in fact. So I think the main role for Imad Wasim rather than an all-rounder is to be a number 6, number 7 hitter down the order to replace Asif Ali. उनकी फॉर्म पिछले सीजन की देखें तो आई थिंक इन माय ओपिनियन ही शुड हैव बीन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. बैट और बॉल से काफ़ी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी. तो आई थिंक it was keeping this lack of a local hitter in mind that this trade was executed. और हाँ, his 34 T10 में भी अभी इतनी फॉर्म नहीं अच्छी रही, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी. It's a risk. So he'll have to bring his A game and depending on his fitness and his form, I think it's early to judge, but it's a 50-50 call. Now I was skeptical of it too क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पेस बॉलिंग काफ़ी डिप्लीट हो गई है, बट यू ऑल्सो नीड दैट लोकल हिटर डाउन द ऑर्डर जो आसिफ अली इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर सकते. वंडरफुल टू हैव दैट साइड ऑफ यू. अरम आपकी तरफ चलते हैं. एनी ग्लेरिंग मिसेस जो आपको सिनेरियो बना रहे थे व्हिच मुल्तान सुल्तान कुड हैव ऑप्टेड फॉर, या लाइक apart from Naseem Shah को of course वो लोग approach कर रहे थे, they couldn't got it. So any dream scenario which they could have opted but they didn't opt it, yeah, like that was the dream scenarios के picks like in end उन्हें picks बहुत अच्छे मिल गए. I feel like we have missed the trick with not having Arafat Minhas as a retained player. We do have two spinning bowling all-rounders with Khushdil and Ifti, but Arafat Minhas is one for the future. But we have retained 7 players, so I feel कि कोई plan होगा, कोई strategy होगी उसके पीछे, maybe to get him back in the draft or some other thing ताकि एक अच्छी pick मिल सकती थी. That is something I think the think tank must have thought and given it a good deal amount of thought, because I think
Rafat Minhas had to be that local player around whom you could build your team. Apart from that, I don't think इतने बड़े कोई glaring misses हैं. I think we're going with an open slate into the draft, and I think it's going to be an exciting time ahead in the future. Hmm. All right. Moving towards you, Hassan. Please correct me if I'm not wrong. Is it confirmed कि शैम मलिक ही आपको लीड करेंगे या and if it isn't the case, नहीं, इन I कोर don't think प्लेयर्स में से रिटेंशन I don't think अभी कैप्टन अनाउंस हुआ है, but I believe जो सुनने में आया था शान मसूद is going to be the captain. Okay. I really wanted to have discussion. So, okay, first of all, Shan Masood को trade करना in T20 itself is a debatable. Like you can see where I am going, but he has been a wonderful performer for Multan Sultan, especially. He has excelled his game, both technically, both mentally. But do you think it is a right choice to be appointed Karachi Kings captain, or is it only Heather Azhar effect? I think like he's okay as a stopgap option. Abhi, I would prefer him over Shoaib Malik. Okay. Both are on the older side, लेकिन Yeah. Shoaib जो है, he's probably around 40 plus right No. now, I think. Shan still in his 30s, तो Don't एक दो go साल there, और शायद खेल सके. Hopefully, बस कर दो. sorry. Go ahead. I was just saying कि शायद भाई बस कर दो अब. हाँ नहीं, शोएब भाई तो कब से खेल रहे हैं, but I don't know उनका क्या like mindset है, उनको कब तक खेलना है, I'm not sure. लेकिन like as long as he's performing for, मुझे domestic level में कोई issues नहीं है. I just don't want him to be Yeah. selected for the national team right now. लेकिन regarding Karachi Kings captaincy, I think hopefully in this draft we will be able to pick some good youngsters who can become part of the core, क्योंकि अभी जो मैंने पहले भी कहा था, जो हमारी core थी वो काफी change हो गई है. So hopefully we will look to Yeah. build a new core, and वहाँ से फिर then we can find someone who can lead the team after 2 to 3 years. All right. And viewers watching us live, please get involved in the chat. Please have your say in the poll as well, which right now, just to rewind it, are Islamabad United favorites to win PSL draft? Yes, the votes are 40%, and no, the votes are 60%. So please have your say कि कौन सी और टीम है जो आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को बीट आउट कर सकते हैं. So moving forward, mini segment we planned it out. Aram, Asan, and Tala, be quick with it. First of all, let's have the say of Aram. I would say, Aram, Multan Sultans का जो अभी तक का squad है, considering all sort of factors, new management, trades हुई, पिछले 2 साल फाइनल में मिस आउट आप लोग करते रहे. So how do you feel with this squad as of now? Yeah, I think considering all the circumstances, it is a very good squad. You have a complete set of local core and local players who you can build around. So I think I'll rate it pretty highly, although people may disagree. But Multan always makes it work. So I think that we are sorted. So good category में डाल दूं, right? Yes. Okay. Tala, have your say. अभी तक गुड के ऊपर कोई कैटेगरी बनाऊं या फॉर नाउ गुड में डाल दूं? ग्रेट कैटेगरी होती तो वो फिटिंग था, लेकिन गुड में डाल दे. Okay, perfect. Okay, one can easily sense it out. Asan, have your say. Karachi Kings again. Karachi Kings को हमें बहुत ज़्यादा margin भी देना होगा हमें, even drafts में भी, because the mess they were in, they needed a massive step. So as of now, जो steps उन्होंने लिए, how would you rate them out? Good, average, or bad? I think I'll put them in average.
like I said, Okay. draft is going to be very important for us. But अगर retentions देखे जाएं तो they're probably average. ओके एसन इधर से क्लॉकवाइज लाइक एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लेते हैं वी डोंट हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर थ्री टीम्स हैव योर से ऑन लोअर क्लंदिस कोई ट्रेड नहीं की राशिद खान को सिल्वर कैटेगरी में पिक कर लिया सो आर यू how would you see them as an outsider because जो sport KK but जो of course can really analyze all other teams as well so ja आप lower क्लंदिस की pick ले लें how would you I, rate them I would put them in good. The only concern for me is के is Rashid going to take part this season? क्योंकि वो I think he just underwent surgery. Um, ja but otherwise उनकी retentions फिर भी अगर उनका local core हमेशा से या last 2 seasons से अच्छा ही रहा है तो ja they will they will be good for me. I think it's okay it's a pretty clear sign that he's not going to be like participating कि silver में retain हुआ है. I think just सिर्फ हाँ उन्होंने बस 2025 अगले साल 2025 की इंश्योर retention के लिए उन्होंने रस रख लिया silver में. और अगले साल भी था कि वो रिटेन कर सके सो या दैट वाज गोइंग टू बी मूविंग फॉरवर्ड तला हैव योर से ऑन क्वेटा ग्लैडिएटर्स On Quetta Gladiators, I would, for a change, put them in good. काफ़ी seasons वो bad में रहे हैं, लेकिन इस साल I would put them even above average क्योंकि ओके उन्होंने बहुत अच्छा core build कर लिया और रिटेंशंस देखें तो टॉप ऑफ द ऑर्डर में जेसन रॉय रायली रूसो ओपनर है नंबर 3 और मोहम्मद नवाज रिलीज़ हो गए हैं उनकी फॉर्म भी काफ़ी बुरी रही है पिछले हाँ साल में लेकिन दे हैव जा middle overs bowler in Abrar, death overs bowlers in Wasim. Astan तो पहले ही हैं तो I think they have an excellent core और अगर अपनी picks maximize कर लें तो they can be playoff contenders this year. यार आई रियली थिंक उन्हें कैप्टन चेंज करना चाहिए और कुछ चेंज करे नहीं करे नो डिसरिस्पेक्ट टू सैफी भाई ही हैज बीन अ वंडरफुल सर्वेंट बट प्लीज I think ये अरम आई गेस आप रह गए 99% लोगों की पेशावर यही जर्नी को opinion रेट होगी. आउट कर दें और कोई डिफरेंस हो ऊपर वाली पिक्स में तो या अरम हैव योर से Yeah, I would put Peshawar Zilmi as bang average for this season. फिर बैट कर दो यार Bad नहीं because वो batting sort of cover कर लेती है Okay. but bowling में they have made specific amount of blunders यानी numerous blunders while retaining. You have picked Khurram Shadad over people like Arshad and other bowlers pacers who you could have retained. So I feel like कि उन्होंने वहाँ blunder किया है but batting उनकी they are sorted in the batting department as far as the batting is concerned. So yeah, viewers, as far as our panel is concerned, अभी तक के स्क्वाड को ये लोग ऐसा रेट करें with कराची and Peshawar being the worst of other lot, बाकी चार स्क्वाड्स को good rate किया गया considering all factors. Moving forward, ये आप लोग देख सकते हैं and of course at that point I would credit HPL Pakistan Super League website and Twitter from which we have taken that graphics out. So credit to them and all the best to all involved in the draft and for all upcoming events. So yeah, Aram, आपकी बारी दोबारा आने लगी है because नसीम को नहीं ले सके whatever happened. प्लैटिनम प्लैटिनम की पहली पिक डायमंड में पहली पिक सो आई मीन जो मस्ट बी लाइक लिकिंग वो क्या कहते हैं जैसे रोनाल्डिनो की एक मीम है ना तो ओके पुट योर आइडियल केस सिनेरियो like your preferred scenario के पहली पिक है प्लैटिनम में who would you go with I think कि जो first pick होगी platinum की this would define how the entire draft for Multan goes because you could आप दो different strategies पे काम कर सकते हैं when you're drafting the side for Multan especially this year considering you have the first diamond and platinum pick
So either you go for a pure, Hmm. genuine pacer overseas in the first platinum pick, or for a Oh, wow. top order or a middle order batsman. So I think कि ये दो strategies different हैं जो मुल्तान इस दफ़ा दे सकता है, opt कर सकता है. But I think if you look at the options, I had some sorted out. You could go for if you're looking at the bowling options, you could go for Fazlul Haq Farooqi, provided Hmm. United do not RTM him, or you could go back to David Willey. As far as I हाँ, think a surprise inclusion could be of Daniel Sams, provided he's available for the event. I think that he could be hmm. a surprising inclusion for the first platinum pick as far हाँ, as ब्रेक Multan थ्रू is प्लेयर हो concerned. सकते हैं. ओके. ऐसन वैसे आइडियल केस सिनेरियो पुट कर दें विच यू रियली रियली वांट, बिकॉज ड्राफ्ट जब भी आप प्लान आउट करें तो देयर इज ऑलवेज टीयर्स आप ही. तो व्हाट इज योर आइडियल केस सिनेरियो, एंड इन केस आराम वाली चॉइसेस हो जाती हैं या जो आपकी अपनी चॉइसेस हैं वो पिक आउट हो जाती हैं, तो व्हाट इज द अदर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर देम? I'm hoping कि मुल्तान सुल्तान से pick नहीं करें and we can get Kyle Mayers as our first pick, क्योंकि he would be good at the top of the order and then आपको 2-3 overs भी दे सकता है with the new ball. Varna, if he does get picked, then we have to pick maybe जो pool है platinum में उसमें से I think मैं कल देख रहा था, if we wanted a batsman then we could maybe go for Rassi Vanderderson, but उसका भी ये sometimes he starts slowly and then we already have players who start slowly in Shoaib Malik या James Vince, even Shan Masood शान. on some occasions. So ideal pick would probably be Kyle Mayers. बाकी if we don't get him, Rassi के लिए जा सकते हैं, या फिर if we want a finisher then we could go for Rutherford, yeah, Tyrone Pollard. And then we could slot them at 5 or जा. 6, and then Irfan Niazi ke saath they would make the lower batting order. वंडरफुल पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट. तला, आई थिंक सो आप शायद वही बात करने लगे थे, इफ आई एम गेसिंग इट राइट. अरम ने अभी हिंट की थे कि वी माइट यूज आरटीएम फॉर फजल हक फारूकी अगर मुल्तान सुल्तान उनके साथ जाना चाहें. ही हैज वर्क विद अस, सो वुड यू बी इन फेवर, बिकॉज आरटीएम एक बार यूज हो सकता है. वुड यू बी इन फेवर के आते साथ हम यूज कर दें, एंड मोर सो फॉर फजल हक फारूकी? And if not, what would be your starting point? Because हमारी platinum के दूसरे राउंड में जाके बारी आने, वो भी second pick. So what would be your starting point कि यार यहाँ से हमने फिर draft का like launching pad लेना. So yeah, have your thoughts. जी, नॉर्मली तो फारूकी को आरटीएम में कर लूँगा क्योंकि एज आई सेड वी नीड स्ट्रेंथ इन बॉलिंग, स्पेशली पेस बॉलिंग. लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर्स पे अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क है. उनकी सीरीज स्टार्ट हो रही है बिल्कुल पीएसएल के स्टार्टिंग डेट के बाद. तो कीपिंग दैट इन माइंड आई वुड नॉट आरटीएम फारूकी, क्योंकि वैसे ही मुल्तान भी अगर सेलेक्ट कर भी लें तो उनको रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी. एंड प्लेटिनम पिक की बात हो तो इट्स द Tala, यस. please confirm me if you have. Okay, okay. I just lost you. Okay. You're back. ओके. Yeah, you are सो back. या Sorry, it was my bad. ओके. सो Okay. एज आई वाज सेइंग कि 8वीं पिक के प्लेटिनम राउंड्स में पहले राउंड की पिक सेक्रीफाइस करनी पड़ी नसीम के लिए. इट वाज वर्थ इट इन माय ओपिनियन. तो हाँ. keeping that in mind, I would go for someone more underrated, more under the radar. Um, uh, you have to strengthen the bowling, so I would go with someone like Reece Topley or Romario Shepherd from West Indies, who can also bat a bit. Yeah, वो options चली गई तो you can go for Gus Atkinson, also England, very fast bowler, can hit the deck hard, middle overs or death specialist है. लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि डू दे गो विद द सेम पैटर्न के ऊपर 3 ओवरसीज खिलाड़ी खिलाने हैं टॉप 3 में और नीचे एक फॉरेन बॉलर खिलाना है, या ऊपर आप एक लोकल प्लेयर भी खिला देते हैं और फिर 2 फॉरेन बॉलर्स.
So I think they will go with three batters up top. So Pelly pick has to be a bowler. I think Topley, Shepherd, or Okay. Atkins, one of these three. Oh, okay, wonderful, wonderful. So these are predictions are four sides from our panelists regarding the first round. So Aram, again, clocking back to you. Since then, you have mentioned कि फजल अख्तर के आप आइडियल केस सिनेरियो के बेस पे लेके चलते हैं कि इन केस आप फजल अख्तर को ले लेते हैं and RTM isn't used by Islamabad United. What would be the next step to strengthen upon batters, bowlers, all-rounders? Have your say if you have like planned out whole thing. Yeah, so आगे डायमंड की भी वी हैव द फर्स्ट पिक सो वी कैन वही डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करती है मुल्तान द पेसर अप फ्रंट इन कैटेगरी और have good options available. बॉलर के लिए आपने ड्राफ्ट करना है सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ द श्रीलंकन टॉल swing bowler Madhushanka, or if you Ah, want to have a batting all-rounder a bowling all-rounder who could give you certain runs, especially who's having a good year, you could go for Azmatullah Omarzai as well in the diamond category. I think he is also going to be a surprising pick. I am surprised that Peshawar didn't retain him this time round, and I failed to understand that. I think he's going to be a great catch for Multan if they're able to do so. But I think another player who is not yet well known to the larger audience is Sam Hain from the English setup, the county setup. I think he'll be someone who surprises a lot of people as well. He did well in the 100 as well. Could provide that stability and good execution in the middle at number 4 or number 3, wherever Multan places him. I think that these are a few options that are available for and I think that'll go with the overall combination as well. Oh, wow, wonderful, yeah. I wasn't thinking that lines. Wonderful. I will bookmark around about 32 minutes. I will rewind it back to wrap my thoughts around Multan Sultan's wonderful insights. Okay, Asan, coming back to you, I think platinum round 2 and diamond 1, that is where Karachi Kings have to win the draft. Like platinum में successively दो picks आ रही हैं, of course third and fourth pick, but not bad के platinum आपको third and fourth picks मिल रही हैं. So you guys have to nail those picks, and if you are to nail those picks backed up है जो आपने पहले round में platinum के pick बताई थी, who would be your go-to guys? I think जो सुनने में आ रहा है, I'm not necessarily agreeing with it, लेकिन Mohammad Nawaz is being considered for our platinum pick, and then I think they're considering Asif Ali, which I wouldn't mind. लेकिन फिर if we do pick Asif Ali, then we probably will have to pick some pacer in the emerging category, क्योंकि Irfan Khan, Niazi, and Asif Ali के similar roles हैं. So either we have to go for a pacer or a wicket keeper, maybe for emerging. And उसके लिए options हैं भी हमारी under-19 team भी अच्छा करके आई है, and Saad Beg could potentially be one option for the emerging pick. And then maybe we could play him at number 3. So maybe number 3 or number 4 pe. We have Shan and Vince, I think, who will open. Number 3 pe, if we Yeah. get Kyle Mayers, that would be really nice for now. But I'm not expecting to get him. So in that case, we can potentially play Saad Beg over there. 4 pe आपके पास Shoaib Malik होंगे. And then we can play Asif Ali, and maybe if we get Sharfin Rutherford or Kyron Pollard. And then Mohammad Nawaz and Tabrez Shamsi would make the spinners. Yeah. बाकी like हमारे जो picks हैं platinum 2 के अलावा diamond 1 में या in any of the gold or silver categories, we probably have to go for some good pacers.
तो मुझे अभी लिस्ट्स देखनी पड़ेंगी, बट इफ वी कैन गेट लॉकली इफ वी कैन गेट मधु शंकर दैट वुड ओके बी नाइस, बट हाँ हमारी डायमंड में जब जो मैं जब डायमंड में देख रहा हूँ फोर्थ पिक है, तो वो भी मुश्किल ही लग रहा है. So I think Haider Azhar will have to, and the rest of the management will have to do their homework, because it's going to be a tough draft, and they need to be spot on with their picks, या considering their retentions itni strong nahi hai. जब रियली वेल पुट तला आपकी इस्लामाबाद की बात करते हैं जस्ट गैदर अराउंड ओके एक अच्छी पिक हमारे पास इमर्जिंग राउंड वन में आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के हम उसमें क्या लेते हैं प्लीज पुट योर नेम आइडियल केस सिनारियो ऑफ कोर्स एंड इन जेनेरिक वे क्योंकि हर राउंड पे बात करने की जरूरत नहीं है बट इन जेनेरिक वे how would you want your ideal XI composition from top to bottom or in general mantra क्या होना चाहिए because there has been like too much obsession with scoring 200 plus and then conceding 220 plus so how would you see that balance और उस balance को कौन से players इन categories में और especially emerging में हम pick out कर सकते हैं I think emerging में it's pretty clear that we're going to pick a pacer, probably Hunan Shah. Just it would be pretty nice to have him with Naseem in the same lineup. लेकिन Zishan इस can't be a bad choice either, right? जी वही मैं कहने लगा था कि अगर ये इसका थोड़ा हाइप फैक्टर भी है ना कि दोनों भाई इस्लामाबाद के लिए खेले हाँ अभी अभी एंड right. और ये आप ओवरलुक करें तो Zishan is an excellent pick. He's been blowing away under 19 oppositions in the Asia Cup. वाह यार So incredible it's performance it's it's a it's a tough choice. I think they will go for Hunan. उसमें हाँ मतलब थोड़ा हाइप की वैल्यू भी है इसमें थोड़ी लेकिन yeah either of them would be a nice pick. I think Zishan or Hunan yeah I think they are guaranteed one of them will be picked by Islamabad. और बाकी राउंड्स की बात करें तो it's not an easy draft. The trade हाँ window was good, but इसका मतलब ये है कि आपने काफ़ी पिक्स दे दी हैं ऊपर वाली. हाँ तो one bowler I missed before was Madhushanka. So one of Topley, Madhushanka and Atkinson would be my choice for platinum. Diamond में जाएं तो आपको चौथा ओवरसीज चाहिए. उसमें again you have to yeah make the choice कि आप टॉप ओपनर या नंबर 3 पे लोकल खिलाते हैं या ओवरसीज खिलाते हैं. तो अगर आपने ओवरसीज खिलाना है तो उसमें you can go for someone who's a bit underrated, Tim Seifert from New Zealand. He's also a wicketkeeper. I think Kyle Mayer's ideal pick, but there's 7 picks before us, तो वो pick हो जाएगा पहले. तो Tim yeah Seifert is someone that Islamabad should keep their eye on. जी मुल्तान को जरूरत भी है I think someone like Kyle Mayer's. और yeah, Tim Seifert would be my pick. और अगर availability का issue ना होता, then ideally Remanullah Gurpaz is also been a player before, excellent opener. Diamond की तरफ जाएं तो I would look for an all-rounder, someone like Romario Shepherd, who I mentioned before. और कोई underrated player आपने उठाना है तो Netherlands का player भी देख सकते हैं, Pasteliede. He was quite impressive in the World यार Cup. मैं वही कहने लगा था कोई नीदरलैंड्स के प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा मैं वही कह रहा था I देयर think आर रियली गुड प्लेयर्स they were really impressive. Or you have pace bowling all-rounders like Bastelide, who can bat in the middle order, top order. Scott Edwards is an excellent hitter down the order. Logan Van Beek can be a good 7-8, an alternative to Romario Shepherd maybe. तो बाद में गोल्ड में तो तीनों रिटेंशंस हो गई हैं, तो सिल्वर में थोड़े फ्रिंज प्लेयर्स पिक करने पड़ेंगे जो बेंच पे बैठेंगे, लोकल प्लेयर्स. उसमें आप एक फ़हीम अशरफ का बैकअप देख सकते हैं, समवन लाइक अनवर अली, या नेशनल T20 के परफॉर्मर हैं शहाब खान. बैट्समैन में शायद आई थिंक अच्छा चांस है कि हैदर अली सिल्वर तक अनपिक्ड रहेंगे. उनकी रिसेंट फॉर्म देखें तो he can be maybe a good pick in the long term, someone who can be given some confidence to play his natural game up the order. और
There's other options like Omer Yusuf released by Quetta. Yeah, Mohammad Faizan is a bit under the radar pick released by Lahore Qalandars. तो या विकेट कीपर में देखें तो साजिद अली also a national T20 performer. So Yeah. these are some of the silver picks that Islamabad can target. और emerging में दूसरा Yeah. player I think has to be spinner. और इसमें you can go for Mehran Mumtaz, left arm spinner from Rawalpindi. यार उसके और साथ वही तो नहीं करना जो हमने जफर गौर के साथ किया है. आई एम रियली baffled, जफर frustrated. गोवर हो सकता है कि फिर सिल्वर में पिक हो जाए, फिर बेंच पे बैठे. For God's sake, Islamabad. I love you, but I hate you for this very Yes. purpose. हाँ, ये काफ़ी जाती है जफर गौर के साथ. और सप्लीमेंट्री पिक्स विल बी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसमें भी आप 2 ओवरसीज एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं. तो you can again go for some of the options that I mentioned before जो अभी पिक नहीं हुई. Asan, Jar, I really wanted to have your say because I really love your insights, especially on up and coming players. Tala, big up to you as well because first time chatting, I would be really honest, but wonderful, wonderful experience so far. Asan, coming towards you, पहले Karachi Kings का ideal case scenario बताएं. Picks are not so good. Karachi emerging category की बात कर रहा हूँ specifically. एक ही pick and that too is last. So if we are talking about the making the best of the worst things, what would be that way? अच्छा, बिफोर आई गो टू कराची किंग्स, मैं इस्लामाबाद की जो बात हो रही थी, दे हैव द ऑप्शन के फर्स्ट में तो ज्यादा करके हुनैन पिक होगा, लेकिन सेकंड में वो उबैद को भी पिक करके तीनों शाह ब्रदर्स को पिक कर सकते हैं. रिगार्डिंग कराची, आई would love to get मोहम्मद जीशान, बट जहां हमारी पिक है वहां तो मुश्किल ही लग रहा है. तो मे बी साद बेग, आई मेंशन्ड हिम बिफोर कि he could be a wicket keeping option as well, and कराची का ही लड़का है, so it would be nice to have some local representation as well. बाकी अंडर 19 में जो चल रहा है अजान अवेस, ही इज अ गुड ऑप्शन, बट हमें देखना पड़ेगा डज ही फिट इनटू आवर टॉप ऑर्डर, क्योंकि आवर टॉप ऑर्डर इज ऑलरेडी काइंड ऑफ पैक्ड. आई थिंक साद बेग वुड प्रोबेबली be the best fit क्योंकि number one he's a local boy, number two आपकी wicket keeping solutions दे देगा, and he can bat at number 3 or even at number 5, and personally I would be targeting him considering हमारी 6th pick है emerging के अंदर. Yup. और correct me if I'm wrong, आप लोगों में से किसी ने अभी तक साहिबजादा फरहान का नाम लिया है? नहीं, अभी तक नहीं लिया है. आई थिंक मुल्तान could actually go for him as well. जो मेरे सुनने में आ रहा है कि I don't know if they're going to go for a wild card and go for the first platinum pick, लेकिन if they don't do that, then फिर मुश्किल भी हो सकता है कि they get him. So if they do want him, they would have to go that route, I think. Okay. हाँ, बाकी Okay. not अच्छा, in the एक जनरल क्वेश्चन फेंक रहा हूँ. अगेन circumvented around Islamabad United. हाँ. हाँ, I was just saying कि not in the emerging category, लेकिन silver category में Ahmad Alam could also be a good pick, not just for Karachi Kings, लेकिन कोई भी टीम के लिए he would be a good option for the middle order. हाँ, agreed on Ahmad. Okay, Tala, starting with you. Shadab Khan, for us, okay, we have seen a style of play, but at times too obsessive style of play. पिछला सीजन इंजरीज की वजह से उनका अच्छा नहीं लगा, उससे पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था. We are very much आप कह लें कि in terms of titles we are underperforming. Yes, we have bullied the opposition and whatnot, but I want to direct कि we have seen 3 or 4 seasons of Shadab as captain. तो
if this isn't the season जहाँ हम at least like final हमें make करना चाहिए, really personally feel we should be aiming for that. But if that isn't the case, do you think moving forward we should be looking at to another candidate within our team, or would you stick with him no matter what? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। ये सरफराज अहमद वाली सिचुएशन नहीं है कि आप बार बार क्वालिफाई नहीं हो रहे नॉकआउट्स के लिए। वी आर क्वालिफाइंग बट वी आर जस्ट नॉट टर्निंग अप इन द नॉकआउट्स। तो ऑन फील्ड टैक्टिक्स भी देख लें या ठीक है। टीम प्लानिंग भी देख लें तो इतनी बुरी नहीं है। इज़ नॉट अ बैड कैप्टन एट ऑल। हाँ सिर्फ एंड में एक्सिक्यूशन रह जाती है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करना होगा। एंड यस, it can be one dimensional, the batting approach. Modern cricket is the mantra for United since day one basically. उस वक्त भी टॉप ऑर्डर में वाटसन, हेडिंग और नीचे रसल वगैरह खेलते थे। ये 2016 से ये चल रहा है। तो इसमें ये जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, शादाब, आजम खान, इमाद वसीम, इनको शायद थोड़ा इनमें से एक को एंकरिंग रोल लेना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर में अग्रेसर्स आप खिला लें, ओवरसीज के हेल्स, मनरो वगैरह, तो वन ऑफ देम शुड हैव टू ड्रॉप एंकर इन केस ऑफ अ कोलैप्स। हालांकि पिछले नॉकआउट में देखें तो उस उल्टी सिचुएशन आई थी कि यू कुडंट प्ले एग्रेसिवली इनफ अगेंस्ट पेशावर। तो ये भी कहा जा सकता है कि उस वक्त सोहेब मकसूद ट्राई टू ड्रॉप एंकर बट डिडंट वर्क। तो दोनों सिचुएशन सामने आ सकती हैं। बट ऑब्वियसली अगर कोलैप्स हो जाए तो वन ऑफ द मिडिल ऑर्डर प्लेयर हैज़ टू ड्रॉप एंकर। और हाँ, कैप्टनसी की बात हो तो यस, ही हैजंट वन अ ट्रॉफी येट, बट आई थिंक ही इज़ नॉट अ बैड कैप्टन एट ऑल। और इस सीजन में आप देख सकते हैं, इफ वी डू बैडली, इफ वी फिनिश 5th और 6th, Okay. फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन Okay. यू हैव टू लुक एट दिस सीजन। Yeah, wonderful. So, Aram, as an Antala, very quick fire predictions लेने लगे हैं। सब टीम्स को इन्वॉल्व करके, नॉट ओनली योर ऑन टीम्स, कंसीडरिंग आप सब पिक ऑर्डर्स जानते हैं, सब प्लेयर्स का अभी तक स्क्वाड पूल देख चुके हैं। कमिट द एंड ऑफ ड्राफ्ट लाइक दिस ड्राफ्ट, ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट पीएसएल जब शुरू होने लगे, रियलिस्टिकली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? Aram, Tala and Asan go one by one in whatever order you wanna go. Yeah. So I couldn't get your question. बीच में थोड़ी थोड़ा disturbance हो गई। का वीडियो Okay, कट हो okay. गई थी इस वक्त। Can you guys hear me now? Can you guys hear Yes, me? now. Okay, okay. Tala, can you hear me now? Yeah, all good now. Yeah. Oh, my bad. My internet is plugging. Tala or Aram, please let me know if you can hear me now, right now. Yeah, I can hear you now clearly. No, I mean, what is happening over there? Aram, Tala, and Asan, just to repeat myself out, I am going to ask one by one from all of you quick fire prediction. That is, जब 13 दिसंबर की शाम होंगे, ड्राफ्ट एंड होंगे, आप सब पिक ऑर्डर्स जानते हैं, सबके स्क्वाड्स अभी तक जानते हैं. Which team do you think is going to come out as victors of drafts? So Tala, go first, then Aram, then Asan. Just one team name. I think I'm confident in Islamabad United that they'll make some smart picks और उनकी core भी काफ़ी strong है। Yes. So I think I will go with Islamabad United। और ये पहले भी केस रहा है कि ड्राफ्ट के बाद वो काफ़ी ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम रही हैं, लेकिन जैसे हमने इंडिया के साथ देखा है, being the strongest on paper doesn't always translate to trophies। तो इसमें थोड़ी execution भी बेहतर करनी पड़ेगी। Wonderful, wonderful. Aram, do you think Islamabad will come out as victors? Yeah, nahi. Yeah, I'll have to sort of agree with Tala here. It's almost every season के
that is the reason Islu fans and the management are called as data merchants for that particular reason, because they do so well on paper. Every day, I don't know what happens during the knockouts, but we've been on the receiving end as well for the last couple of years. I'm also pretty Yeah. confident in Multan, but I'm most excited to see how Haider Asad turns around Karachi Kings. I think that is going Yeah. to be the most important draft for me. और जस्ट टू ऐड ऑन आई थिंक सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी लाइक रिशफल किया अपना पैक तो आई थिंक दे आर मूविंग इन little bit good direction. Shane Vato की coaching assignment would be interesting to see, but I really want to Saifi bhai ko bas Sarab side पे करें, then they would be set. But anyway, Asan, your final predictions for the winner of PSL drafts. I would say Lahore Qalandars probably could end up as the most balanced team after the draft. The only thing that is going to be an issue for them is that they need to find a replacement for Rashid Khan. So if they can pick a good spinner, I think Islamabad is very batting heavy. They do have the option. मतलब अब नसीम के बाद अब थोड़ी इनकी bowling strengthen हो गई है and they will probably pick Honan and that will improve their bowling. But I think team balance Lahore Qalandars का फिर भी slightly better है. Uh, Once again, the only issue is के can they find a replacement for Rashid Khan या नहीं. Perfect हो गया, perfect हो गया. So that is just a rewind to our viewers and to our panelist. ये अभी तक की रेटिंग है हमारे पैनलिस्ट की तरफ से जो अभी स्क्वाड है, and of course we will bring you exclusive coverage for the draft itself. Please check out on our Twitter, and of course we will surely pan out the review show on the day itself. जैसे PSL draft end होगा, we will surely be back, hopefully with some of these guys if they are available. Um, but for now, I think so. We have done a wonderful job so far, and I am really thankful to Aram, to Tala, to Asan for making my job so much easier. इतनी ज़्यादा insights, इतनी ज़्यादा players को सुनने का मौका मिला, and you all have been wonderful listening to. With all due respect, इतने अच्छे मैनर्स में सबने बात की. So big up Aram, big up Tala, big up Asan. Viewers, please check them out on Twitter. I will make sure to pin their Twitter handles in the video handle right after the stream ends, so you can find them out. Shout out to the platform of Asan, cornertigers.net. Please check them out. Their graphics level have gone up in uh, recent past times. हमेशा अच्छे होते थे, but for, ever since World Cups or around the World Cup, they have picked on those levels as well. Wonderful coverage, lively coverage. Big up to their owner as well. So yeah, that is a shout out I wanted to give, and of course Aram and Talaj, you have been wonderful. So yeah, on that note, viewers, please make sure to support our platform as well, by liking, sharing, and subscribing. Please spread the word, that is ARD, with your friends to friends. Please refer them. We are building a something little Kitco project, I would say, but we are participating in men's cricket and women's cricket as well. So yeah, please be with us, and yeah, inshallah हम PSL draft वाले दिन आपको दोबारा मिलेंगे. Till then, myself Ahmed, along with Aram, Tala, and Ahsan are saying goodbye to you. Viewers, जित रहें, सलामत रहें, and Allah Hafiz. Hafiz, and thank you for having me here today.